They have been balancing home, and especially during this COVID, I would congratulate all the women, the empowered women who are doing work from home and then work in home for their children who are studying, going for the Zoom classes, going for Yes. different things, for cooking. The maids were not coming, everything. So the whole, the load was, on those incredible women, and we salute them. And for that instance, where we start for education, education for a girl child is very important. We have two of our programs, as we discussed earlier. Two programs were like Hamari Kaksha, Navneet which ji, was, sorry, yeah, sorry to interrupt you. I'll just start the program with a brief introduction about these queens. sure, sure. All the 20 queens which we had selected from different parts of the countries, and they will be as titled as popular queen of universe, because they will Wow. become the role models for, and they will be more of social activists. They have won different pageants of Miss India, Mrs. India, and this is the second Amazing. upgrade. Yes, where now they are more into activities, because people will be looking up to them when they'll be wearing the crown and going down in the field of education, or maybe helping out somebody in crisis. So they are the role models. So today, with the help of all the speakers who will be coming for all these 5 days, they will be motivated that how they can balance the time, and how what is the actual achievement of becoming a social activist. So this is the Excellent. title of popular queen of universe which they are getting, and everybody is felicitated with a crown as well as with a trophy of the same kind. So they will start preaching in their cities. So now I give it to you. Wow. Yes, sir. Right. Thank you very much. This is such a good, a pat on the back or a reward oriented thing. Uh, Even if you see a child, give him a sweet and you say, you do this, and they'll do it. And similarly, it's incarved within a human being also as we grow. So if you've kept that reward oriented, that is more beautiful, more jewels in their crown you're going to add every day with little social work, doing it, giving it back to the society. God has blessed you, to with incredible beauty and a fame and a good platform where you interact with many people. So if these women, we give them their role, in society, and like they have their own image, they have their own circle, they can do start with very little. So being in various, even in urban cities and in metro cities, you have a lot of slum areas which are the neglected areas, the urban slums, which I've been focusing on. So all of you can do one thing on and off. You can On and off. You can be there. Am I audible? Hello, hello. Yes, ma'am, you're audible. Okay, right. Sorry. So it's like really good to see these beautiful beauty pageants, and I'm viewing it up, and it's a treat to my eyes, of course, and to the world as well. So now we would begin from how you can give your contribution to the society. We have two projects. You can all continue with them. That is Hamari Kaksha for urban slums. If you make small units, you can have volunteers. You must be having some, fan followings, and even you can do it. You keep going to those slums or those segments, and then you can provide them books or for the basic education. Basic education for a girl is not merely confined to education, is the bookish knowledge, but other than that, her values, moral values, her health, hygiene, everything can be covered in those. But the girls, you have to choose between them who are good in studies and can do well with studies. From there, you can put them into some skill. You can sponsor their school fee or something. Like even sending them to government schools doesn't cost much. You don't have to send them to private schools. But that is what I'm telling you. With very little money, we can boost their morale and bring them to some kind of skills or empowerment. And then after that, Hamari Kaksha, we have another this thing. We would put them to Kabil Sukanya. So from there we choose, and then we put them to Kabil Sukanya. Kabil Sukanya is like those capable girls. So from we are starting education from the budding, and then we are putting them into skill or some good education. Those who can study, we can put them into schools. We can, also
enroll them with some venerable, college or some professional skills. It's all depends. You have to choose from Hamari Kaksha, selective children and do their sponsoring in studies and make them Kabil Sukanya. They're under this banner. So Kabil Sukanya is another project. So whereas now they come as Kabil Sukanya, then they can, be on their own with your help, with little courses of beauticians can be done, right? As beauty pageants, this is very common. This is the need of the society. Women are working. They want to look good. Everybody, yes, wants to look beautiful because you are role models. They see you on TV, and we all do want to look like you. We do, portray in front of mirror how beautiful can be, be an imitation of you. So these things are all, they cater to the inner and outer beauty both. So beauticians, this stitching, dress designing, ever here in villages, you're all from the urban areas, but for the villages also you can do. Everybody has their root in some or the other village. So even if you are belonging to some background, some village, there you can have some dairy farming, you can have poultry units for them. It doesn't cost much. You can have some handicraft, something, making scarves or tailoring things, making shawls, and so many units like this. Then even I've done it with we have done small poultry units, and then cottage cheese making. So where there are more milk production is there. So people like women are, we make a small cluster of women, say about 5 to 6 women, and then we enroll them together and make a group, small self-help group, and then they produce some product like cheese. And it is very easy. वही घर में बनाते हैं, and you give them a little training how to make cheese. So which is sold, you can help them sell in the market. It is the need. Society, yes, is imbibed to, they would like to have this cheese and things like that. So many other products where you can put these girls into skill, if not into a corporate sectors, because you see there is lack of, there's a recession. There are no jobs. There is no, people are, jo hai bhi ab job pe, they've lost their jobs or they're very insecure about it. But if a person has a skill, so nobody can beat that skill. Fine. Even in lockdown, women, they had been calling urban clap people, they'd been calling beauticians, right? So these things which are there, so some good grocery unit can be put up. So many things which can, improvise on women. So if you educate a man, they say you educate just an individual, but if you educate a woman, a child, a girl child, she'll educate an entire family. So everything, it's a circle of life which evolves. So everything, why do we call girls when they're small, you say, oh, she's a girly. Why? Because she'll make her hairstyle, she'll wear lovely frilly frocks, she has different attitudes about being a female. And one thing, if you say, even give you a 5 years old, I'm telling you about the responsibility that is inborn with a girl. If you give a 5 years old child a doll, she'll immediately become a mother. She'll carry that child doll with her. It's been happening with you as a child, I believe. All of us as girls. So that responsibility is so beautiful. You become a mother immediately. You'll cradle your doll. You'll wrap it nicely. So you're not a mother, you're not at all. You're a small baby, in fact, for that girl child. So I'm telling you that ye jo cheezein hai, in women, Satyam, Shivam, Sundaram, the beauty and the inner beauty of being a woman, which we really cherish and all of us should cherish. So what else would you, any questions I would like to ask you, how else we can work on it, if anybody has any questions, because I've been into this social work since 2000. It has been almost 2 decades for forming self-help groups and running Hamari Kaksha and Kabil Sukanya. So just any no. Ma'am, can I speak? Yes, dear, why not? Yeah, Jyoti here from Mysore. Okay. Yes, ma'am. It's like there are so many times, yeah, the girl will be educated
and she would be going to work. But at times, circumstances are like that. Once they get married, they're forced to leave their jobs. And even though so many times they're educated, also, there will be some point of time they will be dependent on economically, they will be dependent on so many people. That is right. So I'll they answer your lack question. support. They This lack is support. So I feel, according to me, even an educated lady or anyone becomes a housewife, whether some qualification she has or not, some law or some rule should be made that a housewife also should be given some minimum maintenance. That's what I feel. See, maintenance to each his own, depending upon the circumstances, which kind of family she's married to. Somebody are really married to a very rich person, or a person who's, where a woman doesn't, want to wish or want to work. But there are women who are with this desire to, prove themselves or to create something. And most of us are like that. They want, sorry yes. to disturb. थोड़ा सा हिंदी में भी, because there are some who wants Okay, to sure, sure. mixture So of बहुत सी English. औरतें, it doesn't matter. Okay, we'll हिंदी हमारी भाषा है. I may use few words in English, but ठीक है. So इनका ये हमारे को question था कि काफी जो married ladies होती हैं, जब marriage शादी हो जाती है एक लड़की की, although पहले वो काम कर रही होती है, she's well educated, she's doing her job, and then later, when she's married, they're forced not to do the job. Okay, take the care of the household and all. So for those kind of ladies, आजकल बहुत online काम भी है. ठीक है, आजकल युग एक बदलाव में है, तो she has to meet that challenge. And बड़ी बात क्या है, ये we have to sensitize men also, the boys also, कि शादी की है तो cooperate करो, right? In-laws should be, parents as parenting, वो एक अच्छी होनी चाहिए, कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए. तो ये क्या है, सोसाइटी में आप आए दिन, you have to spread awareness. एंड जो काम कर रही हैं लड़कियां आफ्टर मैरिज भी, दोज हु हैव प्रूवन, चलो बीच में गैप भी होता है, यू हैव मैटरनिटी लीव फॉर ऑलमोस्ट 9 months, and government is giving, and even the corporate sector is giving those beautiful relaxation for a woman, her unki pick and drop facilities for her security at call centers and other places, to make her feel safer, although we are not all that safe. But still there are things which have been initiated by people and social workers. काफी चीजें रिफॉर्म की हैं हमने अभी आगे से, पहले से. सो ये एक युग बदल रहा है, एंड अब भी तो ऑनलाइन हम घर से काम कर रहे हैं सभी, ठीक है. ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन वी आर वर्किंग. सो आई थिंक ये जो लॉकडाउन के ड्यूरिंग हमारा ये जो प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम है, दिस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो. तो अगर किसी ने पढ़ाई अच्छी की है और वो केपेबल है लड़की करने के लिए, शी कैन फिल ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन थिंग्स, एंड दिस इज माय आंसर टू योर क्वेश्चन, डियर. Thank you so much, ma'am. Thank you. Are you satisfied with it? No, no, yes, That is ma'am, what, I am. yeah. I am But we need to. satisfied, but there are at times people in the house, they don't let you work also. वो तो फिर They पंगे try वाले to, लोग हो गए ना, फिर they वहां try पे to रहना. control you. There Yes. are so many people who think if a woman gains economic independence, she won't Yes. listen. You can't control her. So that is one way of controlling a woman. Yes, Yes, that ma'am. is true. Haven't you That done is that? the patriotic society. हमारी जो ये सोसाइटी इस तरीके से बनी है, men chauvinist society जिसको बोलते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत changes आ रही है. And कुछ families ही होती हैं कि पंगे वाली, who would not allow you. Then वहाँ पे रहना कैसे? Then laws for women. Then why not be independent? अगर वो इतनी upset है, दुखी है, if they're really troubling. So अगर if you have a cancer in your body on one part, so it's better to chop it off rather than spreading it inside. So my answer to it is, it's not that I'm telling people to discontinue with relationship. At least I know women has that power to do collectively, and जोड़ने वाली things like that. She is a person whose community, हमने एक shopping ही करनी होती है. A man would go to a market, he would buy shirt, pant or something, उसने shopping है तो एक go में वो फटाफट खरीदता है. But women, they will communicate with her friends. Oh, I want to go to shopping, मैंने नहीं, चलेगी साथ में, okay. तो वो एक group सा, उनमें ना बहुत होता है मिलके रहना. So अपनी friends के साथ, okay, let's go for shopping. अच्छा ये अच्छा है, एक trip लेना होगा तो they will take out hundreds and thousands, पूरी दुकान को ला देंगी.
So that is the thing, beauty about a woman, कि वो she goes collectively, वो society को एक जोड़ती है, and she is very colorful with life. And where अगर men अकेले होते तो it would have just been gray and white. So this is my Yeah, answer, correct, right? ma'am. मुझे Thank कुछ you कहना so है। much, ma'am. Hi, you're welcome. हाँ जी, हाँ जी मैम, जी, मुझे कुछ कहना है। जी बोलिए। हाँ, मैं उमा प्राशर हरियाणा से। Yes, मैं yes. मैम मैं 58 इयर्स की हूँ, तो मेरी उम्र Okay. आप लोगों से बड़ी है। तो मैं एक बात अब कहना चाहती हूँ, हमें वुमेन को एम्पावरमेंट तो करना चाहिए, लड़कियों को एजुकेशन भी देना चाहिए, उनको स्किल डेवलपमेंट भी करना चाहिए, लेकिन अब हमें एक चीज की और जरूरत है बोलिए। कि लड़कियों को हमें ये सिखाना बहुत जरूरी है कि जो हस्बैंड होते हैं उनके पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स ही होते हैं। उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी एक लड़के Yes. को तैयार करने में लगाई होती है। ये फर्क नहीं है एक माँ के लिए कि लड़का बनने लड़के को बड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है और लड़की को बड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ सोसाइटी में, क्योंकि हम रोज फेस कर रहे हैं कि अगर नहीं, हम लड़कियां, हम औरतें इतनी अच्छी हैं, तो मैम ये जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो क्यों रो रहे होते हैं कि हमें Yes. खाना नहीं दिया जा रहा, और वो Yes. बेचारे क्यों ओल्ड एज होम में, आज आज इंडिया में Yes. सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम में बुजुर्ग हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको मैं कहना आपको चाहती हूँ कि बताती हमें हूँ। ये भी अवेयर See, करना चाहिए। I will tell you. सिर्फ मैं A very देखो, good question. अगर हमें पेरेंट्स की सुनिए, लड़कियां क्या कहती हैं, मैंने भी सुना है, हम भी चाहते हैं दहेज नहीं देना चाहिए, मैं एग्री करती हूँ, मैं फेवर में हूँ, लेकिन अगर आपको दहेज नहीं देना तो लड़के के पेरेंट्स की जायदाद तो आपको चाहिए, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट आपको नहीं करनी, उनको एक कप चाय भी आपको नहीं देना, फिर उनकी इतनी पूरी जिंदगी की हुई मेहनत पर आपका मैं हक कैसे हो सकता है? इसका मैं एक बहुत प्यारा सा आपको जवाब देती हूँ। सी एज इज नो बार्स। आप 58 की हैं, आप ठीक हैं, नहीं, पर सेहत मैं अच्छी इस है, एज में हूँ कि that's जब okay. So I am also in the middle age. I am also 50, right? प्लीज अनम्यूट योर माइक। आप म्यूट हो गए। मैं नवनीत जी म्यूट हो गई। हाँ, Okay, sorry. Hello, can you hear me now? इनका क्वेश्चन था कि लाइक द चेंज, इट इज व्हाई, बिकॉज एक तो थोड़ा सा आजकल जो युग में है बच्चे थोड़े हैं, जैसे एक एक दो दो बच्चे हैं, पीपल आर हैविंग स्मॉल फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज। तो जिस हिसाब से पहले पहले डिफरेंशिएशन होती थी लड़का लड़की में, अब आजकल के युग में वो बहुत कम है। तो जिस तरीके से लड़कियां पाली जाती हैं, लड़के पाले जाते थे, वैसे ही लड़कियों को बराबर एजुकेशन, बराबर एम्पावरमेंट, राइट? सो नाउ दिस थिंग हैज कम। तो उससे क्या हो गया, लड़कियों में भी जीरो टॉलरेंस हो गई है। एट टाइम्स दे ऑल्सो वांट द सेम स्टेटस, जैसे पेरेंट्स अपने बेटे को ट्रीट करते हैं वैसे वो चाहती है कि हमें भी ट्रीट करें। सपोज फॉर एन एग्जांपल, it's a question of my house. मेरे घर में ये बीता है कि I have a daughter-in-law and a son who got married, and as usual they got up in the morning, and the few days, every day I used to take 2 glasses of milkshake or cold coffee or subhi lassi, and keep them that at their bedsides, and then used to come out. And my daughter-in-law used to really feel nervous, and she came to me and she says, mama, aap kyun leke aaye? You could have told me. I said, what difference? Pehle Karan ko deti thi, and now I'm Preeti, you are also part of family. How would that change in me कि मैं अब आपको नहीं ऑफर करूं, और मैं I'll sit and wait for my bed tea, or you will get up and be dressed, and that expectations. जब तक हिम्मत है आप भी बच्चों के लिए करो, and when you do it, and they will understand कि now is the time, यार हमारे पेरेंट्स अब गिव अप कर रहे हैं, they will also do it. I ensure you they will do it. नो मैम, This is my answer. एक मतलब ये पॉइंट भी है. I'm not taking targeting you in particular. आप तो एक जनरल हम क्वेश्चन. So मतलब अपने घर से let's practice these things. जिनको ये चीज की समझ आ रही है तो I think वो समझ गए होंगे, बट जिनको नहीं आ रही उनके सीनियरिटी, उनके घर में कुछ डिफरेंट काइंड का माहौल भी हो सकता है। ठीक है, कई बारी गर्ल्स आर वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, जो सुनना ही नहीं चाहती, ठीक है।
So when they don't listen to anybody, क्योंकि हाँ. उनमें they are when you get them married at a matured age, जैसे suppose it's only with few people, जब आप एक थोड़ा सा एज, जैसे आप 18 19 20 की जैसे लड़कियां, तो वो जब घरों में आती थी वो मोल्ड हो जाती थी, they used to be molded. Now the age group, because they are professional, 25 26 27, they will not listen to you. They see that हम भी मतलब we know everything, हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, that kind. ये भी एक this is also one thing which we have come across in our society. And then law towards women और बहुओं की तरफ बहुत ही inclined हो गया, soft हो गया. तो जरा सा उनके लिए वो कुछ बोलेंगी या कुछ, तो एक फियर इन पेरेंट्स माइंड भी रहता है कि ये होगा तो देखो जी ये पंगा पड़ जाएगा, केस होगा, ये होगा. सो ना मतलब थोड़े से वो लॉज को भी बुजुर्गों के लिए थोड़े में चाहिए. यस, पेरेंट्स के लिए आफ्टर ऑल दे हैव गिवन देयर लाइफ टू अ चाइल्ड. बट एक चीज है कि जब घरौंदे बनते हैं पक्षियों के भी, सो व्हेन द बर्ड्स गेट विंग्स लेट देम फ्लाई. सो अगर थोड़े से दूर रहकर उनसे प्यार बढ़ता है और या कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हैं तो आप अपने पे यू कैन do it. Later on when you can't be in that position, and then your children should be there for support. और जो बच्चे नहीं है वो तो बहुत बदनसीब बच्चे हैं जो नहीं सपोर्ट कर सकते पेरेंट्स को. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ योर्स. और ये चीज को हम अवेयरनेस से एक दूसरे के साथ ये मिल बांट कर हमें बैठ के इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. बिकॉज हर लड़की भी आजकल इंडिपेंडेंट है, हेडस्ट्रॉन्ग है, शादी से पहले इंडिपेंडेंट है वो लड़की, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का कमाए या ना कमाए. सो ये चीजें जो सोसाइटी में अब आ रही हैं, तो ये एक इक्वी डोमिनेंट सोसाइटी बन रही है, राइट? सो इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. थैंक यू सो मच. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीबody एल्स? I want one question. जी बोलिए. मेरा नाम डॉक्टर रितेश सुनहरे है. मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ और होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ. वेरी गुड. मेरा क्वेश्चन है कि मैम हम इतने एजुकेटेड हो चुके हैं और अच्छे से घर भी मेंटेन करते हैं, बाहर भी मेंटेन करते हैं, और कुछ टाइम जैसे बेबी कंसीव होता है और उसके बाद बेबी केयर में हम अपना वक्त देते हैं, फिर से अपना जो जॉब है वो रीस्टार्ट करते हैं. लेकिन उस टाइम तक के हम अपने जो हस्बैंड के साथ लाइफ स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं. इकोनॉमिकली, बाई आइडेंटिफिकेशन, जैसा भी है. तो उससे हमें ये सुनने क्यों मिलता है कि अभी तुम्हें इतना है तो तुम अपना खुद का कर लो. भाई मैम, भाई सोसाइटी में अभी भी ऐसी सोच क्यों है लोगों की? ये इसलिए है, आई विल टेल यू, विमेन से एक्सपेक्टेशंस ही बहुत हैं. वो जैसे दुर्गा के 10-15 हाथ होते हैं ना, तो ये मेन सोचते हैं कि ये भी करेगी. मल्टीटास्किंग है तो सही, ठीक है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं. औरत है, ये बनी ऐसे है, बनाया इस मिट्टी से है. मैं आपको बहुत सीधी सादी बात है, हमने एक रिसर्च प्रोग्राम किया था जिसमें कि हमने प्रेग्नेंट लेडीज के मिसकैरेजेस देखे थे कि व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम, जब women प्रेग्नेंट होती हैं, व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम, जितने मेल इश्यूज अगर होते हैं तो जरा सी कोई एक्सीडेंट हो या लेडी गिरती है या थोड़ी सी बीमार होती है तो इमीडिएटली दे मिसकैरेज. बट जो इफ द फीमेल इज इन द फीटस, मतलब अगर विद दैट इन द वूम, अगर औरत होती है तो वो बचती है, वो लास्ट कर जाती है. कई बार ऐसे हुआ कि ट्विंस हैं तो लड़का जल्दी मिसकैरेज हो गया, लेकिन विमेन है, जो औरत है, जो बेबी गर्ल है, शी टुक बर्थ. ये रेजिस्टेंस पावर है हमारे में, सहन शक्ति बहुत है, इसीलिए हम बार बार आजमाए जाते हैं. Right? I totally agree. Thank you, Doji. Women जो है, I said, एक आदमी अगर अपने घर पे छोटी सी बात है, हस्बैंड को कोई चीज अगर ढूंढनी है तो वो सीधा एक ही हाथ सामने लगाएगा उसको. But a woman, she's got 3 dimensions, she will search the same thing from the same place because उसके ना एक natural power है. अभी उमा जी का क्वेश्चन था कि बेटियां हक मांगती हैं प्रॉपर्टी पे, बट सी दीज ऑल ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड है. वी कैन नॉट ब्लेम द गर्ल्स. और ये घर की अपनी शिक्षा, इसमें अपने ही पेरेंट्स का हाथ होता है. मे बी गर्ल के पेरेंट का हाथ होगा या गर्ल की फ्रेंड्स का हाथ होगा, बिकॉज दिस इज इंडिविजुअलिटी, दिस इज नॉट इन टोटलिटी.
सो हम Yes, ma'am. टोटलिटी की बात पर काम करेंगे. इंडिविजुअलिटी के लिए हमें काउंसलिंग करना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा. बिकॉज कहते हैं जब शरीर पे लगती है तो ही इंसान समझता है. तो ऐसी ही लेडीज को जब शरीर पे खुद पे लगती है, देन दे रियलाइज, ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई डन विद माय मदर इन लॉ. बट दैट टेक्स टाइम. सो हम It takes time. के लोगों को चेंज करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा. Time लगेगा, and some do not change. या That is true. change the That is world, true. we can change Yes. ourselves. Yes, we can. हम अपने में बदलाव लाओ. ला सकते, दुनिया को हम चेंज नहीं You कर make, as a mother-in-law, you make your friend circle, you make your own companions, and you will Yes. never get bored. Let me tell you, I'm living all alone by myself. I became a widow 3 years back, right? And I lost my husband 3 years back. I'm alone, but many people said my parents moved there in Chandigarh. They told me, अकेली कैसे रहेगी? Please come be with us. हम भी अकेले रह रहे हैं, बेटे दोनों बाहर हैं. So I said no. I said how much difference will it make कि husband नहीं रहे तो मैं अकेली नहीं रह सकती या मैं वैसे ही काम नहीं कर सकती. I focused myself, and then they also agreed. They saw me moving on in life, focusing on my work, and my kids are also very happy. They have also supported me. So ये चीजें क्या है, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है एक लड़की के लिए, चाहे वो उसका मायका है, चाहे वो उसका ससुराल है, चाहे वो आगे जाके उसके बच्चे हैं. So husband है, बच्चे हैं, father है. So we just need a little pat on the back. एक हल्लाशेरी जिसको बोलते हैं ना, एक शाबाशी की चल चल बेटा कोई गल नहीं, ऐसे तेरे नाल आ. So we are with you, right? So that only makes her move. वो चीज फतेह कर लेगी जो शायद किसी ने नहीं किया होगा. So जिनको वो, जैसे मैंने अभी शुरू में भी began with कि एक बच्चे को कुछ आप बोलोगे ना, जैसे अरे वो पकड़ाओ मेरे को, वो जस्ट वो पकड़ा दो, मैं अभी आपको टॉफी दूंगी या चॉकलेट दूंगी, तो बच्चा फटाफट जाएगा, वो ला के देगा. सो रिवॉर्ड ओरिएंटेड. ऐसे आपकी पीठ के पीछे थप आना, आपकी फैमिली का, आपके हस्बैंड का, आपके फादर का. व्हेन यू गेट अ रिपोर्ट कार्ड, गेट गुड मार्क्स, तो घर में आओ, दिखाओ, तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, राइट? एंड दे पैट यू ऑन योर बैक. सो वो ही हमारे लिए वही काफी है. एक औरत के लिए उसकी छोटी सी प्रशंसा ही बहुत है. एक घर में भी हो गया, वुमेन इज सो टायर्ड, शी इज डूइंग होल डे, शाम को हस्बैंड आएगा, जरा सा बोल देंगे, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड तूने बड़ा काम किया आज, इतना सा उसका कह देना, औरत इज लाइक शी गिव्स, ओह नो 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 नो, कोई बात नहीं, नहीं नहीं लो इसमें ले, मैंने इतना काम नहीं कर सकती, इसमें क्या है, सो व्हाट, कहते नहीं बाहर का भी किया है तूने. तो एक छोटी सी जो एप्रिसिएशन है ना लाइफ में, वो अगर मदर इन लॉज भी ऐड कर दे ना डॉटर इन लॉज के लिए, दोज आर वर्किंग एंड ऑल, so it will really cater to such things, and it will improve our society. ये थोड़ा सा जो सोसाइटी में हमारे रिफॉर्म्स हैं इससे आ जाएंगे, right? So anybody else to ask any question, you're most welcome. Yes, Niharika. Good evening, ma'am. Yes, I'm Niharika from Karnataka, right, and I have a Niharika. question for you. Now we know that women are so powerful, they're mentally and emotionally strong, they are multitaskers, they're everything. I mean, they're just, a powerhouse. But when it comes to certain status in the society, always men are preferred, may it be corporate or political or even in the house. But what measures or what stepping stone would you suggest that we overcome that and we show that we are equally powerful as well, in maintaining everything, like may See, it be in corporate, corporate or right? political? Okay, you think that men are more in the corporate sectors and women are less? Do you feel so? And is it in Karnataka, Bangalore, or Uh, like places like that? Whereas it and is not in Delhi, it is not in other cities. Are you talking about a particular area no, ma'am, I'm talking about the status given to them, like the status? CEO, yeah, Okay, the okay, those status of, kinds. yeah. Yeah, well, when Okay, women are no, they are. if they're multitaskers, why can't, they're potential, Yeah, they have potential, but then they do not want to appreciate women. They don't, as you said, a pat on the back is more than, enough for them to show their yeah. potential. So, So yeah. see, within the corporate sectors, I've seen there is a lot of leg pulling and a lot of jealousy, and that rat race and rising. And if belong to a corporate sectors, so उसका एक बड़ा अच्छा शेर है जो जिसमें वो कहा गया है कि हर शख्स चाहता है पर उसके तराश दूं. पर is the wings and तराशना means काटना, to chop them off. हर शख्स चाहता है पर उसके तराश दूं जिस खुशनुमा परिंदे की उड़ान ऊंची हो.
So people will try to chop your wings, right? But it is you have to fly to, that extent. Apni mehnat karna nahi chodo. A day will come, they will realize they are reforming. जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में या वैसे या इवन इलेक्शंस में, इवन गांव की पंचायत से, देयर आर सीट्स फॉर पंचायत एज सरपंच एज वुमेन, ठीक है. And there are in other many places they have seats reserved for women. So it is not, but corporate sector mein leg pulling is more often seen. And but it is confined to only few companies. I think it is not more of a question that belongs to the society ki nahi ji आ ही नहीं रहा, मतलब women को आगे आने ही नहीं दे रहे. Yes, to certain post even CEO women भी हैं, but ज्यादातर men हैं. Maybe like they think कि they can their performance is a little way. अगर हर युग में हर CEO women बनेगी, टाइम लगेगा. हम अभी यहाँ तक पहुंचे तो इंशाल्लाह आगे तक भी पहुंचेंगे. So we have a long way to go. We are on a journey. We are on that move. We will, and I guess we would achieve that also one day. And some of the women have achieved. We see Daljit ji, out of so many. So there's a saying, you are one cut above the rest. Then you become one cut above the best. So rest में से एक कट ऊपर हो, फिर उस रेस्ट बेस्ट में से फिर एक कट ऊपर हो. सो ऐसे करके जैसे वो छन्नी में छानते छानते धीरे धीरे you rise and you take off the rough things, and the original thing is जैसे हीरा तराशा जाता है. It takes time for everything to come and reach that point. So that is my answer to you. Very well said कि हीरे को तराशा जाता है. Yes, so similarly, yes, तो उसको वो चोटें लगती हैं, corporate sector में या कहीं पे भी, किसी भी field में. Take a woman at any workplace, right? Yeah, and women is a hira, that is why she has to be motivated. She has to undergo lots of pain. Yes. एक baby भी deliver करना, only she can bear the pain. That yes, is very true. Can bear the pain, so that is why people take us for granted. The day when we Correct. start saying we don't want to bear the pain, of course change तो आएगा, but फिर भी औरत के अभी वक्त लगेगा कि लोग Yes. उसे प्लेट में डाल के दे. अभी उसे प्लेट में सब नहीं मिलेगा. There is still Correct. a lot we have to do it. नहीं, we are working hard, we are still striving. ऐसा नहीं है कि जब हम नया नया काम शुरू करती है कोई भी औरत या कोई भी फीमेल, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, तो you have lot many people, रिश्तेदारी and stuff like some people or neighborhood, जो community हमारी sometimes उनका वैसा thinking नहीं है, तो she still you can't give up. You still continue and you'll see एक दिन अपने आप उनके dogs stop barking and they'll realize कि ओके इसका तो रोज का रास्ता ये है, इसको हर रोज इस पे भौंकना नहीं है. So that is how sometimes the society is for some women. But I Rightly think said, ma'am. Thank you. Welcome dear. नवनीत जी एक्चुअली क्या है ना कि दिस इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स, बिकॉज आज भी हमारी सोसाइटी में जब लड़का और लड़की, मदर टू अ सन एंड टू डॉटर, शी ऑलवेज से तू तो बेटा है और तू तो बेटी है, बिकॉज जब तक घर से ये एलिमिनेट नहीं होगा कि नहीं यू शी इज अ गर्ल यू आर अ बॉय बोथ आर टुगेदर. So then these people when they grow, these boys when they grow, they learn नहीं उनका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, because हम औरतें see we women as mother yes again to say that ये मेरा बेटा है सब कुछ कर सकता है और बेटी नहीं कर सकती. yes पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अपने आने वाली जनरेशन के लिए. yes very true. ये चीज आपको मेरे को यहाँ से एक बात याद आई है. There was a very nice poem written by a girl before partition. She says माई नी माई मैनू लोड़ी दे दे. लोड़ी मीन्स जैसे भाई को तुम पालने में गा के सुनाते हो, माई नी माई मैनू लोड़ी दे दे पावे प्यो तो चोरी दे दे. So they used to really tell mother to love them also as the male child was preferred in our society. So हिंदी में इसको आप कन्वर्ट करके बता सकते हैं, उनको ट्रांसलेट करके. So they used to even लोरी भी मांगनी होती थी और कहते थे बाप से चोरी दे दे माँ. So this is वो तो कुछ नहीं है, बच्चों को सुलाने में yes so लोरी देना. So that is what our society was. बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है. बराबर खाने को मिलता है,
and kids are also, girls are also very snobbish today. आजकल बड़ी नखरे वाली हैं. If you are blessed with a daughter, आपको पता ही होगा कि बच्चियां किस नाजों से पाली हैं पेरेंट्स ने. And we have also been raised as daughters in the family. So ये सब चीजें you know, हमारे लिए, I got married when I was very young, right? But I completed my education क्योंकि वो support system था, in-laws से था, husband से था, and then you know came up to this level. So ये जो family में जो आपका जो थोड़ा सा you know that push, little pat on the back will take you far. सो वो बहुत जरूरी है. उसके लिए आपको सबको कोशिश करनी है. आप तो सब ब्यूटी पेजेंट्स हैं. आपकी फैमिलीज में और नेबरहुड में कितनी लड़कियां होंगी यू नो हु टेक यू एज रोल मॉडल. तो उनके पेरेंट्स को समझाओ कि इनको करने दो, लेट देम जॉइन. कुछ पढ़ाई अगर किसी की छूट गई है, कोई ड्रॉप आउट है, तो उसको इनकरेज करो. किसी की नहीं है फी देने के लिए, तो उसको एक बच्चे को फी दे के हेल्प कर दो. सो समथिंग, या कोई ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे दो उसको, कोई स्किल ट्रेनिंग दे दो, ब्यूटिशियन का कोर्स ही ज्वाइन करवा दो, कुछ भी यू नो हेयर स्टाइलर बनवा दो, कुछ एनीथिंग. सो वी कैन हेल्प आवर सोसाइटी दिस वे. Excuse me, ma'am. This is Yes, Dr. yes. B.V. Manjula Kumari. I am from Andhra Pradesh. I just want Yes. to add something to you, whatever you have said, ma'am. Women has to take the initiative by herself. She has to be stubborn enough and she has to take initiative to help herself. Then only the rest of the things follows. Very true. And once she is stubborn, when once she is stubborn, and everybody will definitely help her. That is what I have observed, ma'am. The initiative should be within her. No, see, That's what I feel. I don't totally agree to you, but ठीक है, you are today's girl, an empowered girl. But जो हमारे टाइम का था, वो we were inclined to compromise also in life. क्योंकि बिना compromise के, बिना सब कुछ, हर रिश्ता टूट जाएगा. If we are stubborn ना, तो सब रिश्ते बिखर जाएंगे. And it is the women only. At times you have to give up. But जहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, you need to step your foot down. ठीक है, you can't let anybody step on your toes. But where you feel कि ये let go है, तो वहाँ पे stubborn ना भी हो तो चलेगा, right? So to you know, otherwise you will see divorce rates and things like family breaking बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. So we can't keep that stubborn attitude with us. But yes, we should carry that beautiful attitude with us, but within us, but with a lot of generosity also. First, try to maintain that relationship. But अगर आपको लग रहा है कि yes, there are so many weeds and you need to take them out, pluck them out, नहीं होता, तो then you know, putting your step down and foot down and take a decision, take a call, and you're empowered. You can move on in life, right? Thank you. Surya ji has you. also with us. Surya ji, आपने क्वेश्चन सुने हैं, इतना अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है, काफी हीटेड, आई मीन काफी knowledgeable. It is very interesting though, and very practical. It's Yes, yeah. everybody's They're the realities of, we are talking on the ground reality of life, what people are facing, what women, and it's hello. Yeah, so Surya ji, please आपने कुछ अपने व्यूज रखे इसी टॉपिक्स में. आप प्लीज अपना अनम्यूट कर ले मैम. सूर्या जी. ओके, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी बिल्कुल. हाँ जी, मैं डॉक्टर श्रेया बानो, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में हूँ 29 ईयर से, भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई छत्तीसगढ़ में. और मेरी जो फैमिली लाइफ रही है वो बहुत ही तकलीफ में रही है, और जिस कठिनाई से मैंने आगे बढ़ा है, मैंने अपना एक मोटो, एक स्लोगन कॉपी के ऊपर मैं लिखती थी, मैं सबको शेयर करती हूँ और मैं ये आप सबके सामने भी शेयर करूंगी. जब भी मेरे सामने कोई कठिनाई आई, मैं हमेशा एक स्लोगन को बुक में लिख देती हूँ. नेवर मेजर द हाइट ऑफ ए माउंटेन अंटिल यू रीच द टॉप. When you reach the top, you see how low it was. शिखर पर पहुंचने से पहले शिखर की ऊंचाई को कभी मत नापो. जब आप शिखर पे पहुंच जाओगे, देखोगे कि ऊंचाई कितनी कम थी. 2004 में मेरे फादर एक्सपायर हुए और 2010 में मेरी मदर एक्सपायर हुई, तो बहन का भी हार्ट फेल हो गया. दो डेड बॉडी एक साथ आई.
2012 में ब्रदर भी एक्सपायर हो गए। तो मैं और मेरा नेफ्यू दोनों, हम दोनों हैं परिवार में। बहुत ही तकलीफ और बहुत ही मुसीबत आती है जब एक भरा पूरा परिवार उजड़ जाता है और एक यतीमी का कगार। मैं ये सोचती थी, मैं अपनी लाइफ बता रही हूँ, कि यतीम मतलब एक छोटा बच्चा होता है, ऑर्फन चाइल्ड। लेकिन ऑर्फन केवल बच्चा नहीं होता है, वो हर लाइफ, हर स्टेज में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। कैरियर में, लाइफ में हर कोई आपको गिराना चाहता है। मैडम ने कहा ना, आप उड़ना चाहोगे तो हर कोई आपके पर काटेंगे, हर कोई आपकी लेग काटेगी। ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। आपसे माफी चाहूंगी दलजीत मैडम, मैं 4:30 बजे इसलिए ऑनलाइन हुई क्योंकि 10:30 से 4 बजे तक कंपलसरी कॉलेज का ड्यूटी आवर्स है। और आज ही मेरे को साइन करा है, 4 दिन से मैं लीव में थी, फीवर में थी, तो सर का फोन आया, आपको ऑनलाइन आना है, आज ज्वाइन किया कॉलेज। 4:15 को मैं कॉलेज से आई और 15 मिनट में मैं ज्वाइन करी। सभी क्राउन मैं देखी तो मुझे लगा मैं शायद गलत चैनल को ज्वाइन कर ली, इसीलिए मैं साइन आउट हो गई थी। एक्चुअली में हम कॉलेज से है मैडम 29 ईयर से, और अब ये लॉकडाउन पीरियड में इतनी ज्यादा तकलीफ है कि पहले हम 7 आवर्स काम करते थे, अब हम 24 आवर्स काम करते हैं। 4 आवर्स हमको 4 क्लासेस लेनी है। लेकिन बच्चे क्या है, मध्य प्रदेश में, पहले हम मध्य प्रदेश में थे, अब छत्तीसगढ़ में है, ज्यादातर गांव एरिया के है, और यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है। सरकार जितना भी दे, एक घर में 4 बहन भाई है तो एक के पास मोबाइल है। जितने काम करने वाले सर्वेंट है उनके पास में, मैं अपने घर के सर्वेंट से पूछती हूँ तो एक मोबाइल है, शेयर करके करते हैं। लेकिन सभी को तो आपको जरूरत है। ऑनलाइन स्टडी में फैकल्टीज ज्यादा परेशान है। हम उनको नोट्स देके, हम उनको पूरे लेक्चर देके, वीडियो दे करके सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। आज कॉलेज में वाईफाई नहीं था, एयरटेल में प्रॉब्लम आई, मैं आप लोग किसी से कनेक्ट नहीं हो पाई। ये हमारी ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्टूडेंट्स की भी है। वो मार्केट जाके बुक्स परचेस नहीं कर सकते हैं। अब हम पूरी की पूरी बुक्स भी उनको जेरोक्स करके, स्कैन करके प्रोवाइड करते, नोट्स बना के देते। उनकी फिजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन दोनों ही डिस्टर्ब होते जा रही है। 24 आवर्स जो सिस्टम पर हम काम करते हैं, तो आंख में जो हमें पेन हो रही है वो बच्चों को भी हो रही है। उनके पास में पूरा ना तो इक्विपमेंट है और ना कोई स्टडी मटेरियल है, ना बाहर लॉकडाउन है, मार्केट से वो परचेस नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं मंगा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जितना हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करके करते हैं, स्टडी करा के करते हैं, साथ में फिनेंशियल भी। मैं खुद एक ऑर्फन हूँ, मैं यतीम हुई, तो मुझे, मेरा जो इंटेंशन ज्यादा ये है कि जो यतीम बच्चे हैं, मैं ज्यादा यतीम खाना से जुड़े रहती हूँ। किसी, जितने गैलन आंसू मैंने पिया और बहाया है, वो किसी भी बच्चे के आंख में नहीं आए। जितनी मेरी स्टेटस है, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक का या तो थाली भरा हो, और एजुकेशन की है तो उसके पास में कॉपी, पुस्तक, किताबें सारी। मैं कई सारे कंट्रीज से जुड़ी हूँ एज ए पीस एम्बेसडर, इजिप्ट से, मोरक्को से, नेपाल से, बहुत सारे कंट्रीज से ऐसे हम टच में है। और बीइंग पीस एम्बेसडर, वी आर डूइंग टू स्प्रेड पीस, लॉ, कल्चर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमारी यही कोशिश है कि मानव अधिकार के लिए, मानवता के लिए, जब भी किसी को कोई भी जरूरत पड़े, किसी भी समय हो, हम मौजूद रहेंगे। ओके मैम। थैंक यू वेरी मच। आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है कि आप यहाँ तक पहुंची हैं और इतनी सक्सेसफुल आप आज भी इतना कर रही हैं। बिकॉज दिस इज मोटिवेशन विच आई लाइक वांटेड फ्रॉम द स्पीकर्स टू, बिकॉज दे ऑल आर वर्किंग। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में ग्लैमर के जरिए हम सोशल सर्विस करने की प्लानिंग है, बिकॉज ग्लैमर के बिना कुछ चलता नहीं है। फिर सेलिब्रिटीज को बुलाओ, तो हमने यही सोचा कि इनको ही ट्रेन करें, इनको ही ग्रूम करें, इनको ही सेलिब्रिटी बनाए, और हम सोसाइटी में इनको उतारे कि देखो हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते।
तो बिकॉज दिस इज नो चेंजिंग द सोसाइटी इज बाय आवर सेल्फ. सोसाइटी अपने आप चेंज होने वाली नहीं, पहले हम खुद अपने आप को चेंज करेंगे, उसके बाद ही सोसाइटी चेंज होगी. So anybody wants to ask any type of questions from both the ma'ams, you can ask. Navneet ji, she is doing so much of social service in Jammu. अभी कल परसों ही कुछ बच्चों को स्कूल में गई थी. Like I really admire her, the way she moves on. She has devoted her whole life, and I think the blessing and the happiness which you get at the end when you go to bed, that is unmeasurable. उसका कोई मैडम का देखा मैंने, मैडम का बॉर्डर पे, इंडो पाक बॉर्डर का मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा. ऐसा लगा हम भी ज्वाइन करें. अभी थोड़ा लॉकडाउन है, थोड़ा सा जब ये एरिया अपना ओपन होगा तब जरूर मिलेंगे और मिलके करेंगे. अभी बाहर नहीं जा सकते तो हम क्या करते हैं, मेरी ये सोच है कि हम अपना हाथ फैलाएं और एक सर्किल बना ले. उस सर्किल के सराउंडिंग जो भी है सफाई करना है. हम पूरे 135 करोड़ की आबादी की इंडिया को नहीं सफाई कर सकते. एक हाथ फैलाए, एक सर्किल बना ले, अपने चारों ओर का यदि हम एरिया साफ कर ले तो पूरा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा. ऐसे एम्पावरमेंट की बात आती है तो मैं दूर नहीं जा पाती, क्योंकि परिवार की परिस्थिति दूर है. घर के जो सर्वेंट्स है, उनके हस्बैंड्स क्या बहुत ड्रिंक करेंगे, अल्कोहलिक रहेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, तो उनको मोटिवेट करके उनका ग्रामीण बैंक पास में उनका अकाउंट खुलवा दिया. उनको एजुकेशन देके, जितने भी लैब अटेंडेंट्स रहते हैं, जितने भी प्यून है, घर के सर्वेंट है, कोई भी 6 महीना तो कोई भी मेरे यहाँ नहीं टिकता है. सबको मैं ओपन स्कूल से पढ़ा करके और उनको हेल्प करा के उन लोग बेटर जॉब में चले जाओ. बाद में ये होता है कि घर का काम भी खुद करो और प्यून का काम भी खुद करो, अटेंडेंट का भी खुद करो, क्योंकि मैंने सबको भेज दिया. कोई भी 6 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाता. तो बस हम एक अपना हाथ फैलाए और अपने सराउंडिंग जो एक सर्किल बनती, उतने एरिया को हम सुधार देना. कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब चाहे. पूरी दुनिया को सुधारेंगे तो हम नहीं सुधर सकते. हम जहां पे खुद है अपने आप को सुधार ले. जैसा दूसरे उसे चाहते हैं, मैं चाहूंगी आप ऐसा करें तो वो चीज मैं कर लूं. खुद एक रोल मॉडल बन जाए. और अपने आजू बाजू जितने हैं, कहते हैं कि पहले घर में, जो हमारे में मुस्लिम सोसाइटी से मैं हूँ, फितरत ज़कात जो देते हैं उसका भी यही सिद्धांत है. पहले अपना घर देखो, घर में कोई नीडी है क्या, किसी के घर में थाली में खाना नहीं है क्या, जरूरत नहीं है क्या. फिर अपने पड़ोसी देखो, फिर अपना समाज देखो, मोहल्ला देखो, और फिर राष्ट्र देखो. तो छोटे पैमाने से ही हम यदि हेल्प करते जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं. So anybody wants to ask any question? Yes, yes, please. अपना unmute कर लीजिए. नवनीत जी, we can't hear. Yeah, now here I am present. एक चीज और है हमारी सोसाइटी में, जो शुरू से लड़कों जैसे बन, वो देख, मतलब तू लड़कों जैसे ब्रेव बन, ये कर वो कर, वाई उनकी मिसाल हमें दी जाती है. सो उससे क्या है, कई बार क्या है, कुछ हिस्सों में तो वो बड़ा पॉजिटिव काम करता है, कुछ में the real worth of a girl dies, that femininity in the girl that dies. जैसे एक लोटस को आप बोलो कि you become a jasmine, तुम कली बनो, so it is not possible. तुम उसको पानी में से निकाल के जमीन में प्लांट करोगे तो it will die, it will dry. So जो ब्यूटी एक औरत में है या एक विमेन है, एक विमेनहुड की है, that is more important, कि उसको तुम अच्छे से संजो के रखो, उसको और ब्यूटिफाई करो. जैसे कि you all are so such beautiful women on this panel. I had enjoyed seeing beauty crowns and crowned with such beautiful faces. जो भगवान ने आपको ऐसे बनाया है, उसने आपको सुंदरता दी है, उसको सवारो सजारो, अंदर से भी सजाओ और बाहर से भी. अंदर से तब सजा सकते हैं by contributing and giving back to the society. So let's make that, and I really expect कि जो ये आपने एक forum बनाया है, all these women, 20 beautiful beauty pageants, the crowned queens. So we would like कि हम ये जैसे 2 छोटे projects हैं, हमारी कक्षा and काबिल सुकन्या, ये दोनों जो projects हैं, आप इनको आगे बढ़ाएं, इनको like let's get started wherever you need help कि किस तरीके से करना है. जैसे कई स्लम्स हैं, आप एक किसी पर्सन को बोलो कि 2 घंटे या 1.5 घंटा आपने वहां पे पढ़ा के आना, उसको 2000 दे दो, महीने का 2500 दे दो, 3 दे दो, वो तब भी वो कर लेंगे कि एज अ वॉलंटियर दे विल गो टीच. एंड 2500-3000 निकालना
और उस बच्चे को देना, उनको स्लम्स में जो एक ट्यूशन काइंड्स जैसे कुछ 10-15 लड़कियों को पढ़ा दे, तो यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू आर अर्निंग ऑन वन एंड, एंड देन उसमें से थोड़ा सा, जैसे हमारे में दसवंत निकालते हैं, द 10th ऑफ आवर व्हाटएवर वी अर्न, तो हम तो खैर दसवंत से कहीं ज्यादा, आई डोंट थिंक आई एम लेफ्ट विद एनीथिंग आफ्टर आई व्हाटएवर आई हैव, सो थोड़ा थोड़ा contributions करके आई थिंक इट विल बी वर्थ दैट द मिशन जो दिलजीत जी लेके चल रही हैं, एक जील से कि इनको इकट्ठा करूं, इनके थ्रू मैसेज भेजूं, तो अगर वो तभी पूरा होगा कि लेट्स कीप इट वंस अ मंथ एटलीस्ट, एंड लेट्स सी कि क्या कोई कुछ करता है, मतलब इन्हीं को एक ग्रुप बना के एक एक सोसाइटी के अंदर, लेट्स रजिस्टर इट अंडर अ सोसाइटी और लेट इट बी put it under your NGO or any thing. It's just a forum of the queens, the beauty of the queens, right? The inner beauty of the queens. इस तरीके से कोई वो एक NGO बना लें या एक society. So they are known as popular queen of universe, where So- like all the queens of last year also they are doing lots of activities in See. their cities. I'm very proud of them. Still today Yeah. they keep on doing something or the other. Plantation of the So लोगों को अब हमने क्या सोसाइटी को क्या बताना है, इन क्वींस की इनर ब्यूटी. सो Yes. इनर ब्यूटी इज विद द गिविंग, को जो दिल से ये करना चाहे किसी के लिए भी है, nobody will take any funding, do it on your own. ठीक है, we don't need funds. मैंने I started from zero and I'm still a zero. But उससे क्या है, today's time I have 37 self-help groups among the border area. 37 self-help groups and say about 370 scholarships to children each year we are giving. So वो क्या है, उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन करवा दी, उनको कोई स्किल में डाल दिया. गवर्नमेंट के बहुत प्रोग्राम्स हैं. जब आप एक बार ये करना चाहेंगे ना, people will come forward themselves, they will sponsor sewing machines दे देनी, और चीजें दे देनी कि ठीक है चलो आप अपना काम कर दो. So my message to all of you is कि कुछ ना कुछ इसको धीरे धीरे हम शुरू करें. So अभी हम थोड़ा सा चाहेंगे कि एक contestants का introduction किया जाए, हमारे guest speakers के पास कौन कहाँ से है. So let us start. In the meantime, Mubaraka will join us. So contestant number 1, please speak little small, crispy introduction. Very good evening to all the queens and invitees. Myself, Ashakten Ponsam from Manipur, and I am Mrs. Iowa India 2017 first runners up, and I have represented my country at Singapore as Mrs. International, and I'm also Mrs. Universal 2018 finalist. And I'm also a social activist and a fitness trainer, freelance fitness trainer. Thank you so much. Okay. So contestant number 2. आपकी आवाज नहीं आ रही उमा जी, माइक में प्रॉब्लम है. Hello. Yes, we can hear. Okay. Hi, this is Uma Modi here. Good evening, madam, from Mumbai. I work with Max Life from 18 years. I used to do a lot of social work when I was in Navsari, running an eye bank. I used to enjoy it very well. I was the Mrs. Iconic Personality 2019 first runners-up with the subtitle of Mrs. Iconic Personality 2019. Thank you. Okay, so nice, Uma ji. Contestant number 3. Delegate number 3 rather, because this is not a contest. So yes, the number 3, who is with us? Number 3. Who is number 3? Okay, number 4. Hi, Manjula. good evening, everybody. This is Dr. V.V. Manjula Kumari. I'm from Andhra Pradesh. I'm a queen from Iowa last year, that is 2019. I've been the second runner-up in Iowa Mrs. India 2019. I'm working with a few NGOs regarding women empowerment, organ donation campaigns, menstrual hygiene, and other things. I'm a physical therapist by profession,
and I am a proud winner of Karambir Chakra, and also I got my honorary doctorate as I am working on non-surgical obesity management programs and other things. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Contestant number 5, sorry, delegate number 5. Hello everyone, I'm Jessica Laishram from Manipur. I won Miss Personality 2017 in Miss Pineapple Queen 2017. And in the year 2019, I won Miss Majestic India International 2019 along with Miss Majestic Beautiful Hair and Miss Majestic Popular Face. And in the same year 2019, I won again Miss Iowa India 2019 second runners up along with Best Catwalk. And this year I won again Iowa Supermodel 2020 along with Miss Best Catwalk. Thank you. Okay, so next delegate number 6. Delegate number 7. Tina. Yes, Tina. Unmute yourself, Tina. Unmute yourself. Yes. Good evening, everybody. I'm Tina Riang from Tripura, and I was subtitled most active 2019 last year, Mrs. Iowa India, and Mrs. Sorry, a supermodel by Kalakar held at Goa. It was also in 2019. Thank you. I just want all the delegates to speak about your social activities which you have been doing and what are your plans. And that is more important of this platform, right? Okay. So number 8. Good evening. मैं कृष्ण प्रिया त्रिपाठी ओडिशा कटक से. हेलो मैम, सुनाई दे रही है? Yes, we can hear you. बोलिए ना. मैं कृष्ण प्रिया त्रिपाठी ओडिशा कटक से. मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ. मैं अपने बच्चों को उनके लाइफ में सेटल करने के बाद सौंदर्य क्षेत्र में अपना कैरियर शुरू किया. एट द एज ऑफ 50 मेरे जीवन में मुझे मेरी पहला अवार्ड मिला मिसेस स्वयं सिद्धा. उसके बाद मिसेस कलिंगा वधु, मिसेस ओडिशा, एंड 2019 में मुझे मिला मिसेस इंडिया आइकनिक का खिताब. थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am. 9. Who is number 9? Number 9 कोई नहीं है. Yes, Mercy is number 9. Mercy, unmute your phone. Hello, everybody. I'm Mercy Kurazam from Manipur. And after winning Iowa Beautiful Smile, I have been working, doing various activities like planting trees and going for the medical free health camp. And also I'm an active member of the House of Elegance, doing many activities like visiting the old age home. Thank you. Good evening, everyone. तो रख ये कि अपने इरादों पर तेरी हाथ तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं होगी. मैं गरिमा अग्रवाल, आयोवा मिसेस इंडिया क्लासिक 2019 लखनऊ से हूँ. मैं 20 साल से कैंसर अवेयरनेस के लिए काम कर रही हूँ कैंसर सोसाइटी के साथ मिलकर. मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ. साथ में ही मैं सर्वित सेवा कल्याण समिति जो वुमेन एम्पावरमेंट और सेव वाटर सेव चाइल्ड के लिए काम करती है उनके साथ एसोसिएट हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ. हम लोग ने विशाला शक्ति फाउंडेशन भी बना रखी है जो कि स्टॉप हंगर पे काम करती है. हम लोग एक गुड़गांव में ड्रीम स्कूल भी बना रहे हैं जिसमें 40 किड्स के लिए हम लोग स्कूल बना रहे हैं और उनके लिए खाना हम लोग उसी में फ्री देते हैं. साथ में मैं NAPC नेशनल एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर की फाउंडर मेंबर भी हूँ जो पैलिएटिव केयर के लिए काम कर रही है. आजकल पैलिएटिव केयर के लिए बहुत जरूरी है सबको जागरूक करना. तो मैं सोशल एक्टिविटीज में 20 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं इन सब के साथ लगी हूँ. थैंक यू.
Hello everyone, I am Shalina Saikom from Manipur. I am Miss Manfit Queen 2018 and Orange Queen 2018. I've completed my Master in Life Science and currently pursuing Bachelor of Education. And I'm a person who believes in bringing changes for the betterment of a society. Thank you. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं सुधा अवस्थी उड़ीसा झारसुगुड़ा से। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सोशल एक्टिविटीज में भी पार्ट लेती हूँ। मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ जिससे जिनको भी जो सीखने की इच्छा है, सिलाई को या सैलून का कोर्स या मेहंदी, कुछ भी, वो हम लोग बहुत ही कम फीस में उन्हें सिखाते हैं। जो कि मतलब अगर वो जो नहीं पे नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसको मैं अपनी तरफ से सिखाती हूँ। और मैं ऐसे कई समिति से भी जुड़ी हूँ जहाँ पे लोगों के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं पहुँचाना, वो मैं करती हूँ। और अपने आसपास में जिसको भी जो भी जरूरतें हैं, अगर वो मेरे आसपास दिखती है तो वो भी मैं पूरे करने की कोशिश करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छा सबके लिए करूँ, जितना हो सके सबके काम आऊँ। थैंक यू। Okay, Niharika, number 14. Ma'am, it's me, 13. Oh, sorry, 13. Yes, yes. Good evening, everyone present here. I'm Zoya Sapam. I'm your Idol Miss India 2020, an ambivert and enthusiastic person from the beautiful state of Manipur. I'm a model, currently pursuing my graduation in arts. Thank you. Okay, next, number 14, Niharika. Good evening, everyone. I'm Niharika Hunkeri from Karnataka, a biotech engineer by profession who loves to explore and also have been a part of many social activities like helping the needy with distributing blankets and food, and with activities like awareness of traffic rules. And I really hope can do my bit for the society, and that is why I'm on this platform. And I'm also a winner of the first runner-up of IVA Miss India 2020. Thank you. Good. Next, number 15, Victoria. Hello, ma'am. Good evening. Good evening, all the beautiful ladies. I am Victoria Okram, mother of 2 beautiful kids. I'm from Manipur and a social activist and an active member of House of Elegance. I am Mrs. Iowa First Runners-Up 2019 and Best Male and a social media queen. I'm truly grateful for this beautiful platform. Thank you. Okay, number 16, Umaji. हेलो, मैं उमा प्राशर हरियाणा यमुनानगर से, और मैं मिसिज इंडिया आईवा इन एक्सक्लूसिव कैटेगरी सेकंड रनर अप 2017, और मैं एक डांस टीचर हूँ और एक कोरियोग्राफर हूँ। और मेरा एक ही मतलब कि अपने बारे में एक सोच है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा तुझसे आके पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। क्योंकि हमें भगवान ने दूसरा जन्म दिया है और हमारा एक ही काम है, सब में प्यार बांटना, और सबसे ज्यादा अगर मैं प्यार करती हूँ तो छोटी बच्चियों को प्यार करती हूँ जो मेरी स्टूडेंट्स हैं बिलो 5 इयर्स, और सबसे ज्यादा मैं प्यार करती हूँ बुजुर्गों को, क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, वो मुझे बच्चों की तरह लगते हैं। और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं KU के NGO है जहाँ स्लम के बच्चे पढ़ते हैं, मैं वहां जाती हूँ, लेकिन मैं वहां भी उनको डांस सिखाती हूँ और उनको बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आम बच्चे भी डांस नहीं कर पाते, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजर्स को बोलती हूँ कि इन बच्चों को आप मंच प्रदान कीजिए, तो उन्हें डांस सिखाती हूँ, उन्हें स्टेज पर लेके जाती हूँ। और वृद्ध आश्रम में मैं हफ्ते में 2 बार जरूर जाती हूँ और उनको गा गा के भजन सुनाती हूँ और उनको खूब खुशियां देती हूँ। मेरा आईवा में आने का भी एक मकसद है, बट सब में प्यार बांटना है
और जो असहाय है उनकी हेल्प करनी है। बस अगर हम जाएं तो हमें कोई याद करे कि हाँ कोई थी उमा जो हंसाती थी। खुशियां बांटनी चाहिए। आज भी याद करते हैं, आपको मिस करते हैं 2017 से। तो मनीषा जी, नेक्स्ट इज मनीषा. So Mubaraka ji has joined us. Hello Mubaraka ji, how are you? So Mubaraka ji has joined us. I'm very good, and a big hello to everybody. I'm so glad to be here again and to look at all these beautiful, wonderful faces, and definitely go home, with some very important and nice takeaways which we can all use in our day-to-day lives. So thank you for having me, Daljit. Yes, we were just doing the introduction. Just 3 of them have left, so we'll take your session after that. So next we have with Manisha. Manisha, unmute करो mic को. Mic को unmute करो. नमस्ते, मैं मनीषा महाकालकर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही मैम मेरी? हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। अनम्यूट करो अपने आप को। मनीषा, हेलो, यस यस फाइन। हाँ, सबको मेरा नमस्ते। मैं मनीषा महाकालकर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और उसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा सोशल वर्क भी करती हूँ। अगर किसी को मेरी जरूरत है वहां मैं पहुंच जाती हूँ और मुझे सबकी हेल्प करना अच्छा लगता है। मैं 2019 में आईवा मिसेस इंडिया सेकंड रनर अप बनी थी और मिसेस राजनांदगांव 2017 में बनी हूँ। 2017 में मिसेस छत्तीसगढ़ का अवार्ड मेरे हाथ में है और अभी पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और दलजीत मैम का सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उसके लिए मैं बहुत थैंक्स हूँ और ऐसे ही बड़े मंच में मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर आने की कोशिश करूंगी और मुझे खुशी होगी कि इस बड़े मंच में आने के बाद मैं अपना नाम, अपने साथ साथ मुझे अपने परिवार का भी नाम रोशन करना है। मुझे अच्छा लगेगा और सही में जितना खुशी हम लोगों को देते हैं उतनी खुशी हम सबको मिलती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम खुशियां सबको देते हैं, बहुत मन प्रसन्न लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा। नेक्स्ट ज्योति। ज्योति, hello and a very good evening to everyone present here. This is Jyoti Bidi from the heritage city of Mysore, Karnataka. I've been the winner of IVA Mrs. India 2020 in the classic category. I'm an advocate, RJ, and a program coordinator, model, dancer, and a fitness enthusiast. I have also been a secretary of Mysore Hair and Beauty Association, which has been affiliated to IVA, which we recently formed this association in Mysore to help the beauticians in Mysore, especially and all over Karnataka, because the government here, the government was giving grants to all sections of the society, to different categories of the society, but beauticians were one category where they were not given any grants and they were not given any help. So this association is formed. See, mainly beauticians, more of women are in that. So to help these women, this association is formed. Apart from that, I have involved myself in various organizations which work for the welfare of women, like Lion and also Rotary, all these things. And whenever they work for the empowerment of women, I have been an active member with them to help, and Sanskriti also, which is in Mysore. And I also give legal consultation to the distressed women and refer them to people to solve their legal tangles. And my vision is to see all the girl child be educated and every woman economically, socially, mentally, physically empowered. Thank you so much. thank you, very nice. And we have with us Ritesh Sonare. Ritesh, are you there? Yes, ma'am, I'm here. Yeah, okay. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, every queen. My name is Dr. Ritesh Sonare. I am from Chhattisgarh, Korba. मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और पिछले 12-13 सालों से प्रैक्टिस में हूँ और साथ 2019 में मैं आईवा मिसेस इंडिया में एक सबटाइटल
क्वीन हूँ चैरिटी की। तो उसके बाद से मैंने आईवा मिसेस इंडिया की चैरिटी क्वीन की किताब के पहले भी मैं वर्किंग थी, सोशल वर्कर का काम करती थी प्रैक्टिस के साथ साथ, और अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही मैंने उसमें इन्वॉल्व हूँ। जैसे मैं विज्ञान सभा की सदस्य हूँ और नेचर से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड हम लोगों के बहुत से अभियान चलते हैं, और साथ साथ में जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पर अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करती हूँ, उनको हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस देती हूँ। और सोन चिड़ै अभियान में भी मैं स्कूलों में जाकर के हाइजीनिक हाइजीनिक के बारे में बताती हूँ। और जैसा कि छत्तीसगढ़ का इलाका बहुत ही बैकवर्ड में होता है, बहुत सारी जगह यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे बहुत से बच्चे जो हैं उनको कपड़े ढंग से नहीं हो पाते, तो हम कपड़े और दवाइयाँ प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं सबको, और टाइम टू टाइम फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। और दलजीत मैम का मैं थैंक यू कहूँगी क्योंकि मुझे सेकंड टाइम उनसे मिलने का मौका मिला इस पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स 2020 में पार्टिसिपेट करने से। थैंक यू दलजीत मैम, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे वापस से आपने चांस दिया है, इसलिए थैंक यू सो मच। गुड लक, गुड लक। सो अब हमारे साथ मुबारका लोखनवाला घड़ियाली जी हैं। Mubaraka, I'll tell you, आपसे पहले we had two speakers with us, Navneet Kaur ji. She's from Jammu, a social activist and a multitasking woman. You should have, I mean, you missed her speech, but anyways, so she had given a very good lecture on women empowerment and education to women. And Suraiya ji was with us from Chhattisgarh, Bhilai. And about Mubaraka ji, I'll tell she is a multitasking again. ये एक पायलट है, एक इंटरनेशनल लॉयर है, सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं। रिसेंटली अभी इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बुक लिखी है विमेन के ऊपर, जो कि इन्होंने नाम दिया वाओ मैन। So she thinks that wow man, every woman should be wow man. So now I give it to Mubaraka ji to give a small her vision on women empowerment and why education is required. What really makes a lot, what difference it brings in women's life if she is educated. First of all, thank you for having me, and it's so very wonderful to seeing everybody. And I always say that educating one girl child, when you educate one girl, you're actually educating the entire family. So we have started this one particular program called Meri Saheli, wherein we are now educating the girl child and we're educating mothers as well. Mothers and any woman in the family. So what we are trying to do in that is, one, we are trying to make them self-sufficient. We are helping them to stand on their own feet and to achieve their dreams. Also, we provide to them community welfare centers to women where we give them. I think there's a network issue with Mubaraka ji. She will join back. In the meantime, if anybody wants to ask any question from Navneet ji and Suraiya ji, please continue. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आपको अपनी लाइफ में सोशल एक्टिविस्ट के लिए, कोई आपकी, see sometimes there are so many obstacles in life which you don't know कि मैं उसको कैसे निकालूं. So these people who already have devoted their life in the social activities, they will definitely guide you for that. मैम मुझे एक सवाल पूछना है. हाँ बोलो जी. जैसे कि हमारी स्पीकर ने बताया कि एजुकेशन एंड देन गिविंग सम शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इस विषय में मैं पूछना चाहूँगी कि व्हिच वन विल बी मोर effective if I have to go for like providing an education to girl child, or should I go for like giving a small scale help, जैसे कि आपने बताया कि कैसे इन लोगों को हेल्प करनी चाहिए, तो उन दोनों में से अगर एक ऑप्शन लिया जाए तो कौन सा बेहतर? Okay, can I answer this question? May I take the opportunity of answering this question? Yes, ma'am, please. Right. Daljit ji, with your permission, I am going to answer this question. इनका सवाल था कि किस तरीके से उनकी हेल्प की जाए, whether education or skill. Is it clear? Right.
बट सबसे पहले एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने वो आपके 2 प्रोजेक्ट्स अपने बताए हैं, दैट इज हमारी कक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो उसको अगर हिसाब का ही नहीं आएगा कि जो जमा जोड़ जब वो कमाएगी तो शी मे लूज ऑन मनी। सो बेसिक एजुकेशन, चाहे वो काउंटिंग है, उसको प्लस माइनस एंड एक बेसिक किसके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, वो आप भी सिखा सकते हैं एज अ वॉलंटियर। यू कैन टीच जैसे थैंक यू या जो भी आपकी लैंग्वेज वहाँ पे उस कल्चर, बिकॉज एवरी स्टेट हैज देयर ओन, बट इंग्लिश जैसे एक बड़ी अच्छा माना जाता है या मतलब तरीके से कि थोड़ा you will have better customers to you or they will add on, so thank you, sorry, please, और कुछ इस तरीके से जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको सिखाए जाएं। दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, जो एजुकेटेड हैं और उनमें से जो अच्छी पढ़ने वाली हैं, उनको किसी स्किल में उनसे पूछा जाए कि अच्छा यहाँ आपकी जिसमें हुनर है, आप अपना हुनर ही उनको बेहतर सिखा सकती हैं। So you can train them like whatever you are into. If you're into a beautician as a beauty pageants में से, तो उस स्किल में, उस साइड में आप उसको कहीं ना कहीं उसको डाल सकते हैं। जिस चीज में आपका हुनर है, you will be the best teacher in it. So either that way or anything. अगर उसका स्टडीज में या किसी और चीज में उसका she is imbibed to different type of skill, आप उसमें उसको हेल्प करें। कोई फ्री इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे इग्नू के, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन वोकेशनल ट्रेनिंग, ये हर स्टेट में है, तो आप पता करें, ऑनलाइन सब कुछ है, वहां पे आपको निकल जाएंगे कि फ्री स्किल ट्रेनिंग, यू डोंट हैव टू पे। गवर्नमेंट गिव्स स्टाइपेंड ऑल्सो, 1500 रुपए महीना या 2000 रुपए महीना उन बच्चों को, उनकी ट्रैवलिंग का, इंस्टीट्यूट आना और जाना, अगर शहर में है, गाँव में है, कैसे उन्होंने वहां पहुंचना है, तो उनको वो जो ट्रैवलिंग फेयर भी मिलता है। सो यहाँ पे आप उनको करवा सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको कल को जरूरत पड़ेगी तो आई कैन शेयर दोज डिटेल्स विद दलजीत जी for such kind of programs and skill training this thing with the government of India. So we can you can tie them up. आप वहाँ पे उनको एक रास्ता दिखाना है, that's it, because you are educated, you have the torch, that light in your hand, so you can show that path to them, right? Thank you. Okay, so Mubaraka ji is back with us. We lost you because of the network. So Mubaraka ji, please continue. Yes. So I was saying that, we've started this mentorship program. So we're targeting women from across all backgrounds, It could be a girl child, it could be her mother, it could be a grandmother in the family as well. So we're bringing them all under one umbrella, and we're trying to impart some sort of skill and some sort of education to them so that they in their own family become self-sufficient and they can go ahead and, try to achieve their dreams. They can not only provide for themselves, but also their family. So this is a new program that we have started, and we are doing it with the help of this workbook, which again I have authored myself. There are 29 chapters in that, and each chapter is nothing but a self-awareness program, that how much you have achieved, where you are right now, and where you can go in the future. So if anyone is interested, I'm more than happy to share the details with you of the program, and I would be very glad to have you on board the program. Yes, ma'am, please let us know about it. About this women, I want like Mubaraka ji to speak a little bit about women empowerment to this few minutes now. What do you think about women empowerment? So women empowerment, is a topic which has been extremely close to my heart. Ever since I was a young child, a young girl, looking at the mighty and the small problems around me, that kind of moved me. And that was always in my heart that, what should be one good solution to all these problems. So I went ahead and wrote a book about it, and everything is mentioned in my Hello Woman book, and I'm a testimony actually to all of these. And they always say that, you should be the change that you want to see. So I believe in, imparting the right kind of education first in your own family, in your around whoever. So I strongly urge each and every one over here also that any woman you see, it could be your friend or it could be your, your mother or anyone, just empower one woman and you will actually see the change.
just by empowering one woman, if every woman just, because usually women have this habit of bringing others down. So we should get ahead of that. We should move away from that and try to bring up the other women as well. We should, not try to pull them down. And see, because a woman is the one who sacrifices herself, I mean, if a girl and a boy are given equal opportunity, the girl definitely has to do more. Zarina, so the boy has to do, because she has to first look at her own things, then she has to do for her family, and then she has to go out and achieve what she has to. So support and collaboration at all levels across all women is extremely important, is what I very much believe. Also, it is my humble request to each and every one of us to, not stereotype other women. We have to move ahead from the gender bias society, because we have, especially in the Indian society, there is this feeling that, okay, once the girl is married or once the girl has a child, she should not be, she doesn't have the ability to go out and achieve, because we start stereotyping, okay, that now she's a mother, now she's a wife. So we should move ahead and away from these kind of, gender bias societies. Also, my book has been translated into more than 10 Indian languages. So I request each and every one of you, because in the book I have given concrete solutions to problems. I've not only, mentioned the problems, but then, very concrete, very simple ways how you can move away from the problems and achieve what you want to in life. So I strongly suggest each and everyone to please read the book. And if there is any suggestions, any feedback you want to include in that, because I feel all these wonderful women are extremely empowered and they come from somewhere, and I feel that they all have the power to change the society, to change the way we think. You all are all extremely powerful women. Some of you all I have already heard in the past, and I strongly believe in that. So please get in touch with me, and I'll be more than happy to include any of your suggestions. Thank you, Daljit. Thank you, everyone. Mubaraka. It was wonderful session today. We had it on women empowerment, because women, what according to me, if somebody asks me women empowerment, I will say women are already empowered. It is what required in today is a recognition, which is not being done. So only we start recognizing the works and done by women is most required. That nobody does. Everybody is empowered. That is because they're educated, they're multitasking. कोई कमी नहीं है, बस हमें सिर्फ recognition की जरूरत है. जिस दिन हमारी society ने हमें recognize कर लिया, तो हमारे empowerment में we'll add on crowns and we'll add on 5 stars to that. So we're just waiting our society to recognize all the abilities which all women around are doing. And even though like she takes care of the house, she takes care of the, even in lockdown she worked like a maid because there were no maids नहीं थे, बट उन्होंने मेड वाला भी सारा काम किया. फिर हस्बैंड है घर पे तो 10 बार चाय भी बनाई. फिर ऑनलाइन, बिकॉज हमने लॉकडाउन में मिसेस इंडिया शुरू किया था, तो दे हैड टू मेक वीडियोस आल्सो. आई कुड इमेजिन they used to not sleep at night and make those videos because they had to submit the next day for the pageant. मतलब औरत को अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो सबसे पहला इनिशिएटिव उसे खुद ही लेना पड़ेगा. और जब वो कामयाब हो जाती है, अगर 70% भी वो कामयाब होती है, so then the family members, they say, oh yes, yeah, she's my wife, she's my mother, or she's my sister, she's my, so blah 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 blah, all relationship comes. But there is nobody on this earth that holds a woman and shows her the path कि तुम इसमें अच्छा कर सकती हो. Generally 90% of the male in the family, they only degrade. Arey, you are old enough now, it's your age is over. Even some sons, they tell their mothers, this is not your age to do all this, mom, now forget it. So ये जो है फंडा, that's what I said, that nobody picks you up. As rightly said by Manjula also, that a woman has to be stubborn. Only that word stubborn was little bit, I think, more abrupt. But we should say that she has to take her own decision, that I have to, and rightly she should take her own step. 4 कदम आप चलोगे तो दुनिया साथ चलेगी, लेकिन आप एक ही कदम में आप ये चाहो कि कोई आपको सपोर्ट करे, नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है. Maybe only 1% or 2% of the family members or even husbands, they will support you. So it was a very good session. I'm so thankful to Suraya ji from Chhattisgarh. She joined us. We heard a very emotional story, and Navneet ji, she's also now at par because she has been working on the Indo-Pak border, educating small girls, helping them. It was a very tough job which she's doing there because she has to do nothing now. Her motto is to live for the society.
and the blessings, I think what she's getting is being shown on her face, in her body language, which is glowing and shining. And Mubaraka ji is every day she is into webinars on the women empowerment speeches, because the book she has written is really beautiful one. I have read some pages of that. The book is really motivating. You should everybody go and read it, because she has it on the Kindle. She has it Kindle handle. You have that book, so we will share you the link for that. You can go through and empower yourself. Not empower exactly, I will say boost yourself, motivate yourself. That will be the right word. Okay, so thank you very much for joining us, and I'm so thankful to all of you. Anybody wants to ask any question? So we got 3 speakers on board, can clear your doubts right away. Right? No? I think all are empowered. All are now. I don't use the word empowered. I use the word motivation. Ma'am, I want to ask one question to Mubaraka, ma'am. Yes. You told so much about her. What motivated her to write this book? Actually? Her husband. That's what I said, since I was a young girl, I mean, like, I saw so many women problems and small, not only like huge ones, but even these little problems. And I always felt that women are the ones who have somehow, more problems to deal with, than men. So that was always at the back of my mind. And I saw a lot of women, just leaving their careers and just, then moving on with life and not really exploring the potential in themselves. So that kind of moved me. I didn't like it. So I said, one fine day I'm going to like pen down whatever I feel in my own little humble way, how a woman should come up in life and, not get bogged down by society. So I thought maybe I'll just pen it down. But the overwhelming response that I got was really phenomenal. And I felt that, if someone is going through the problem, even if it is, whom I am actually seeing that, okay, she is going through a problem and I'm going through a problem. There could be millions of people around the world, millions of women around the world who are also going through the same problems, but who are not maybe sharing or, who are just living with it. So why not do something, whatever little bit you can do about it, So that's the reason I thought I should pen down my thoughts. And also, I have also gone through the whole journey of, being a PhD, a pilot, and then mothering 2 children and, raising them. So I have also personally gone through that whole entire process that every woman goes through in her life. So I had this habit of penning down my whatever thoughts, and then finally I realized that I have written down so much that actually it has become a book, So that's the reason I thought of releasing the book. So that is the reason. It was very nice. Answered your question correctly. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. Very well said. These pageants, I'll tell you, Navneet ji and Mubaraka ji and Surya ji, when I do this pageant, I'm doing it from last 6 years, and I have been meeting women from different small cities. Everybody has dreams, but when I talk one to them, everybody has got some kind of, sadness, some kind of a very heavy heart in themselves. So in this pageant, some of them cry, some of them speak. So this is how when they meet each other, they feel, oh, I'm not the only one. She's my next companion is undergoing the same thing. So this is how they get empowered themselves. And I have met so many beautiful ladies, then what pain I had in my life. So I could totally forget that. After I was thinking, oh no, if let me just listen to them. So, that is the first thing you should always speak up. You should, and see, it's very difficult. There are certain things which you cannot share with your family. You cannot even share with your husband. Sometimes you cannot share with your own mother, because there are so many things. Maybe they say, no, tere mein galti hogi, tere mein galti. So always, this kind of things you get. But there has to be a platform. This is a platform which Mrs. India I made ki, like, you have to, like, where they speak up. Really, they speak up the heart which they have in themselves, and then they feel very lighter, they feel very empowered, and the aura of those women, they changes when they go back. Now there are some from 2017, from 2018. I'm seeing them much stronger what they were. So the idea of my beauty pageant is not just making them walk on the ramp. My idea is to mold them into a different personality, is to help them live the life, fulfill their dreams, what they wanted to do it.
बिकॉज रैम्प पे चलना इज फॉर अ डे, एक दिन का अफेयर होगा. लाइफ लॉन्ग, maybe if you're lucky enough you get some more fashion shows, some of them get, some of them don't because family doesn't allow you to travel. but ये social activity से, एक role model से, people around you they start taking you little bit on a upper level. so ये खुशी जब उनको मिलती है तो automatically aura भी उनका change हो जाता है. so ये मेरा या. Very well said. Could I speak a little? Yes, Aniji, please. If with your due permission. Mubaraka ji, this is my message to Mubaraka ji for the incredible output, right? Her incredible output for writing, and I congratulate her for her book, Wow Man, right? It is Wow Man. Really must be something, a wow factor. We would love to go through it. And each woman is a book by herself, you know. So let us not leave any page unturned, and we can speak to each other, share our problems, and with that we can lead examples and find something concrete to improve bring in reforms in our society. So that is my message to the entire group and this panel today. Thank you very much, Navneet ji. Thank you very much. And thanks for coming and sparing your time and motivating and bringing some more kind of empowerment to, not empowerment, again, bringing out their own self that yes, I can, so that I can has come back to all the females. Right. You know, these ladies are definitely going to work and change 10 women in their life. As I've always make an agreement with them that they have to do this thing. So I'll give you an award next year. You know, I keep on awarding them the next year, and I watch who is doing the best. This is how, because when I'm motivating one, they're taking care of another 10 people in their life. So those 10 Yes. people, they spread a word to another 10 people. This is how the Yes. chain grows, and everybody grow together. This is wonderful. It leads to a wonderful, it will give you beautiful results as it has been seen on the screen today. Although, socially apart, with the social distancing, but, as if, everybody, you've united everybody. Thank you so much, Diljit ji and Ms. Lokannala and Suraya ji, with all the beauty pageants here on this panel. I'm so indebted to you with your kind words, your question and answers. I've enjoyed this, answering you with my experiences. You can add on more if you have any questions, any problems regarding helpline. So yesterday I had an interview with the Times Now. The topic was rape culture in India, a new normal. So to rape also, they are calling it as a new normal. Why? So topics like these, we will come up with Daljit ji next time. Right, definitely. We would like to pick up, and so to save the girl child and give them awareness, let's find some solutions to it. Definitely. Why is it coming as a new normal? So Yeah. I think Hello, ma'am. that's what. Yes. मैम मुझे कुछ पूछना है. हाँ, पूछो ना. हाँ मैम, जैसे सब तो चेंज कर सकते हैं मैम, बट अगर प्रॉब्लम घर से ही है, फैमिली से ही है, तो उस पे कैसे वर्क किया जाए? जैसे मतलब फैमिली को चलो लेट डाउन कर दिए, लेट गो कर सकते हैं, बट अगर हस्बैंड है और बच्चे हैं, तो बहुत कुछ मतलब सोच के इंसान आगे कुछ नहीं कर पाता है, करने की इच्छा होने के बावजूद भी नहीं कर पाता. जैसे मेरे साथ भी बहुत कुछ है ऐसा कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट फिर पीछे वापस आना पड़ता है. और ऐसे पास्ट में भी बहुत कुछ हुआ है जो मतलब मुझे फिर से बैक करना पड़ा. तो उसमें क्या वर्क कर सकते हैं मैम? Yes, no. For this, I would say maybe there are some personal issues only which she cannot openly tell. I would give you my number for her, and she can take that counseling from me. Whatever help I can give it to her. And ताकि ये भी खुल के बता सके कि भी होता है, थोड़ा सा पर्दे में, and everybody has a little, income. Women are there to keep secrets to themselves. And I wish I can solve that of yours. And if you could share my number with her, it would be nice and we can do it. ऐसा भी होता है ना कि मतलब क्या किसके लिए बोले? अपनी फैमिली है, अपने ही घर के मेंबर है, हम क्यों अपने ही घर की किसी और से मतलब अगर बुराई करो तो देखो, अगर बीमार हो तो अपने डॉक्टर के पेट दर्द हो रहा है या आपको सिर दर्द हो रहा है तो अपनी वही मेडिसिन लेनी है या उसी डॉक्टर के पास.
आपको हड्डियां दर्द हो रही है तो ऑर्थो के पास जाओगे, कैंसर है तो आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओगे, राइट? सो सिमिलरली आपकी ये जो है ये दिस इज you know this will make you sick, this will make you stressful ये within 18 years से मतलब फेस कर रही हूँ सारा कुछ, अभी थोड़ा बहुत सही हुआ है, बट उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे पड़ा है, माइंड पे पड़ा है, जो कि मैं yes, रिकवर नहीं कर पा रही। don't worry, you Daljit ji will share my number with you. I do a lot of counseling, I am a psychologist also. So जो भी हेल्प हुई, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ थोड़ा सा ईज तो करेंगे हम, बाकी you know some are your efforts, आपने ऐसा नहीं कि efforts नहीं किए होंगे, but still we'll see how we can help you by counseling you and to know your inner कि किस तरीके से आप उसमें और योगदान दे सकते हैं, how can you mold your husband or you can get your children support towards you in the whole entire this thing. So हो सकता है कि उससे आपको थोड़ा राहत मिले, कुछ फर्क पड़े। Thank you, ma'am. Welcome. Okay, so we end the session today here on women empowerment. मैं कहना चाहूंगी मैडम, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। Very well said. Very nice. हम कुछ करेंगे तो हमारी सामने वाले की एक उंगली हमारी तरफ होगी, लेकिन 4 उंगली हमारे तरफ आएगी। इसलिए किसी को पॉइंट आउट करे तो ये सोच लो कि 4 उंगली हम अपनी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। मैम मैं लास्ट में कुछ कहना चाहती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए और वो जरूरी भी है, हमारे राइट्स भी होने चाहिए, लेकिन जो राइट्स हमें मिले हैं उनका हमें मिस यूज नहीं करना चाहिए। ये मेरा सब जो मुझसे छोटी हैं, जो मेरे बराबर की हैं, राइट्स का मिस यूज नहीं करना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। हमें अपने राइट्स के लिए तो स्टैंड लेना चाहिए, हमें हमारे साथ गलत हो तो बोलना चाहिए, लेकिन उसका मिस यूज हमें नहीं करना चाहिए, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। बट उमा जी ये क्या है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। हाँ, पर्सन टू पर्सन। ये काउंसलिंग करके उनको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम उनको समझा सकते हैं with some experience of ours, you know, but क्या होता है ऐसे लोग वक्त आने पर समझते हैं। कुछ लोगों को आप जितना भी समझा लो उन्हें नहीं समझ आएगा, but experience makes them understand automatically when it's a self realization, you know, when there is a self realization, that is the way you change yourself. जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा आप किसी को बोल ही नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हो। ऐसा होता है मैम, आजकल जो जैसे हम समाज में घूम रहे हैं, जो मेरे पास भी 2-4 केसेस आए, ऐसा हुआ कि शादी हुई मैम तो उन्होंने ना एक सिंगल पैसा भी नहीं लिया लड़की वालों से, मतलब कि 1.25 रुपए में शादी जैसे करते हैं, शादी हो गई, लेकिन थोड़ा डिस्प्यूट हो गया आपस में, लेकिन उन्होंने 15 लाख का उनके ऊपर लड़के वालों पे डाल दिया, और वो हैंड टू माउथ थे लोग। तो आप ये देखो कि वो लड़के ने सुसाइड कर लिया, और मतलब ऐसी जो परिस्थितियां हो रही हैं उनसे मुझे बहुत दुख होता है। यस, कानून का, और कुछ लड़कियां जो हम लड़कियां हैं, लेकिन जब कोई एक लड़की भी गलत काम करती होती है तो उंगली हम लोगों पे जाती है मैम, क्योंकि जब हम वुमेन्स के लिए खड़े हो रहे हैं तो वुमेन की गलतियों को भी हमें ही देखना है। जैसे भी रिया ने गलत किया तो वो हम सब के लिए शर्मिंदगी वाली बात थी, ड्रग्स में गई, कुछ भी किया तो वो गलत था ना मैम। तो लड़कियों को थोड़ा सा अपने एथिक्स को भी साथ लेके चलना चाहिए। अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो हमें अच्छे काम ज्यादा करने चाहिए, अपनी बुराइयों को भी खत्म करना है, समाज की बुराई तो खत्म करनी है। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग इशू, बिकॉज ये वक्त आने पर ही समझेगा। हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, रियलाइजेशन करवा सकते हैं। लेकिन रियलाइजेशन में उनको समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप अपना सर नहीं फोड़ सकते, यू नो। इनके पोज हमें होना चाहिए मैम। यहाँ भी हमें 10 लेडीज को इकट्ठा होकर कहना चाहिए कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप इनके ऊपर जो केस है ये गलत हुआ है, या आप इन लोगों के साथ गलत कर रहे हो। तब हम क्या होता है, हम मुख खड़े हो जाते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिकॉज कानून में भी अभी इस बात का यू नो बहुत सारे रूल्स निकल गए हैं। लॉ में आप आगे लॉयर्स आएंगे, वो आपको बताएंगे कि अभी कोई भी अगर लड़की
रहना नहीं चाहती कि अपने माँ बाप को छोड़ो, कोर्ट ने उसको तलाक 0 पैसों से तलाक देने के लिए परमिशन दे दी है। ये चीजें हमें नहीं मालूम ना। नहीं, नहीं मालूम, यही जागरूकता करनी है। कोई भी लड़की फोर्स नहीं कर सकती अपने हस्बैंड को कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ो और मेरे साथ अलग रह के जाओ। अभी कोर्ट ने कहा अगर आप इन लॉज अगर ये कोर्ट में केस डालते हैं तो उस लड़की को तलाक दे दिया जाएगा बिना कुछ मेंटेनेंस के, बिकॉज वो पेरेंट्स को बेटे से अलग कर रही है। ऐसे बहुत सारे नए रूल्स आए हैं जो आगे हमारे 5 डेज के वर्कशॉप में लॉयर्स आपको बताएंगे, बिकॉज लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जो नए नए रूल्स आए हैं। देयर आर, यही जागरूकता हमें एनजीओस की तरफ से यही जागरूकता करनी है। तो एक बंदा गलत कर रहा है लेकिन हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते, हमें जो लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो फॉलो करने हैं। ऐसे जितने केसेस हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं, फॉल्स रेप केसेस हुए हैं, लड़कों का कैरियर स्पॉइल करने के लिए, पर भी गवर्नमेंट ने अभी काफी हद तक केसेस जल्दी हाथ में इसीलिए भी नहीं लेते हैं। देखो, एक तरफ जो केस होता है रेप का, उस तरफ हम सब बोलते हैं कि रेप केस हुआ, इमीडिएटली फांसी, लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है वो बंदा निर्दोष हो, उस पर गलत, हम इमीडिएटली फांसी तो नहीं दे सकते। लॉ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रूफ चाहिए उनको। लेकिन हाँ, जो बच्चियों का रेप करता है उनको तो वो तो उसी समय उसके साथ तो बुरा होना चाहिए। बच्चियों को समझ नहीं होती, पर बड़ी लड़कियों के साथ भी अगर होता है, 10 लोग मिल के करते हैं, रेप होता है, वो गलत। Yes, I would like to, may I answer her question? जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका था कि लड़कियों ने दावा किया, लड़की वालों ने, and they didn't have money. For this, there is a remedy these days. एक शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन होता है, that is prenuptial agreement. तो उसमें लिखा जाता है कि अगर मतलब कुछ ऐसा इन दोनों का कोई ब्रेकअप होता है या डिसॉल्व होती है शादी, तो उसमें दे आर नॉट लायबल टू पे ईच अदर की जो भी है। अरेंज मैरिज में ऐसा लोग अच्छा नहीं मानते, नहीं अच्छा नहीं मानते, बट ये टाइम आने वाला है शायद, इसीलिए रिफॉर्म्स ही हैं कि उसका और तो कोई चारा नहीं है। सो लड़के वाले दे आर कमिंग अप विद दीज, बॉयज आर कमिंग बिकॉज दे हैव टू गिव एलिमनी एंड थिंग्स, बिकॉज कहीं इसका गलत यूटिलाइजेशन भी हो रहा है विमेन एम्पावरमेंट का, एंड लॉज आर वेरी फ्लेक्सिबल टू विमेन एंड गर्ल्स। सो जाति भी विमेन के साथ जाति भी बहुत ज्यादा हो रही है, पर टाइम है कि so it's but this is one agreement which can be done. चलो पढ़ी लिखी फैमिलीज कर सकती हैं, अगर दूसरों में, ठीक है, right? Thank you, thank you, love you. Thanks for your time. Mubaraka ji, thank you very much. Suraya ji, thank you very much. So we will don't go. We will continue with your ramp walk. We have to do a little bit of 15 minutes of training on the ramp walk. So let's just give a thanks to my guest who has come today. So I cannot offer tea, coffee. Thank you. This has come to us. Daljit, thank you. Thank you. Right. Okay. All right. Thank you. All the very best, and thank you all the members. It was a lovely session. We really enjoyed. All the all boarding, we really entertained.